أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا। और जब उनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो उसको मशहूर कर देते हैं, और अगर उसको पैगंबर और अपने सरदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी तहकीक कर लेते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो चंद अशखास के सिवा सब शैतान के पैरू हो जाते। And when there comes to them information about public security or fear, they spread it around. But if they had referred it back to the messenger or to those of authority among them, then the ones who can draw correct conclusions from it would have known about it. And if not for the favor of Allah upon you and His mercy, you would have followed Shaitan except for a few.